Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted, and this video is all about the TISSNET and TISSMAT queries that all of you are having. Many people write to me कैसे करना है सर, prepare TISSMAT के लिए कैसे करना है. First of all, why apply at TISS Mumbai? ठीक है, I'll be providing you with the placement report of summers and final placements. ठीक है, latest placement report दिखा रहा हूँ. क्यों? Why placement report सबसे पहले? Because we are Indian students मेरे भाई. We care about the placement. भाई पैसा कितना मिलता है ना? Although this is not the right way to apply for the only criteria shouldn't be paisa, but the reality is this. So I'll be showing you the placement report just to motivate you to apply for TISS Mumbai. You wouldn't want to miss on this opportunity, because अगर HRM का नाम मैं इंडिया में लेता हूँ, so TISS and XLRI are like the niche, the best colleges in the country. ठीक है, in India. So आप किसी से भी पूछ लो, ओके, दीज आर द ओनली टू कॉलेजेस विच यूल हियर. बाकी सब बाद में, जैसे जनरल मैनेजमेंट में IIM A सुनाई देता है, B सुनाई देता है, C. अगर HRM का बोलोगे तो TISS और XLRI सुनाई देगा. So you wouldn't want to miss out on this opportunity to do your MBA at this college. So that's why I'll show you the placement report. ठीक है. Then what is TISSMAT? Last year से TISSMAT शुरू हो गया है. So what is the pattern of TISSMAT for HRM and LR? Now if you want to apply for HRM, TISSMAT is compulsory for you. So I'll be showing you the syllabus, how to ace TISSNET TISSMAT, a few tips, last year TISSMAT analysis and the cutoffs. Okay, so फटाक से देखते हैं. We'll start first of all the placement report. Okay, so TISS Mumbai had released the placement report for class of 2020 मतलब 2018 to 2020 का batch. Okay, and as always the institute saw participation from top brands including ABG, Amazon, okay, Reliance Industries, Tata Administrative Services. Now TAS is one of the dream companies for many colleges, but it only visits 7 to 8 colleges in India for the recruitment. And then there's Hindustan Unilever, Mahindra Group, amongst others. These are some of the names there are a plethora of other companies, top-notch companies visit TISS for placements. 1 in 5 students from HRM batch received salaries in excess of 25 lakhs. Yeah, so yeah, 25 लाख की सैलरी बहुत लोगों को मिलती है. 1 in 5. Okay, so 1 in 5 कितना हो गया? 1 in 5 is 20%. Almost 20% से ज़्यादा लोगों को 25 lakhs के ऊपर सैलरी मिला है. And some of the highlights मैं आपको नीचे शो करता हूँ. कुछ बोल देता हूँ. Colgate Palmolive, highest package of 32.79 lakhs per annum. Average salary stood at 21 lakhs per annum compared to last year is by 5 so average salary increased by 5.43%. So growth is also good than the last year. Okay, the median salary, this is the most important part. Okay, क्या होता है? I hope you understand the difference between average and the median salary. Median salary shows the real statistics, real placement figures. Very few colleges in India release the median package. आप किसी भी IIM का उठा के देख लो और मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कितने IIMs अपना median salary एक्सपोज करते हैं. This is for the summer placement. Summer placement क्या होता है? जैसे आप MBA कॉलेज में जाते हो, फर्स्ट 3 months के बाद, फर्स्ट ईयर में ही 3 महीने के बाद आपका समर प्लेसमेंट प्रोसीजर शुरू हो जाता है, विच इज ऑनगोइंग राइट नाउ इन मेनी कॉलेजेस. बेसिकली इंटर्नशिप होता है आपका 1 year of MBA. आप जब खत्म करते हो तो यू डू अ 2 months internship and then start your second year. So TISS Mumbai wrapped up its summer placements of batch of 2019-20 with 100% paid internships. Recruiters like Asian Paints, Colgate Palmolive, Accenture, Nivea, Mondelez, Shell, and several others participated in this process. And Colgate Palmolive highest stipend of 1.6 lakhs per month. So 1.6 lakhs per month was the highest stipend. एक महीने में 1.6 लाख, 2 महीने का 3.2 lakhs आप समर इंटर्नशिप में कमा रहे हो. ठीक है, हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है, हाईएस्ट स्टाइपेंड है. 2 महीने में काम कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ MBA के बाद, 3 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में. ओके, मेहनत का ये छोटे तो पहला राउंड है. हार्ड. ओके, सो number of participating students was 70. Number of firms that made an offer 47, 41. Sorry. So these are the number of companies. ये तो ऊपर का मैंने just example दिया है.
there are many companies visiting. Okay, average monthly stipend. Now, average monthly stipend was 1,37,000 and highest monthly stipend was 1,60,000. 2 lakhs 2 महीने में आप समर इंटर्नशिप में कमा लोगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट दिस, जो आप समर इंटर्नशिप में 2 महीने में कमा रहे हो, दिस इज द फीस एट टिस मुंबई. सो यू आर रिकवरिंग योर फीस ऑफ टिस मुंबई फॉर 2 years in your summer internship of 2 months. Isn't it cool? No EMI का झंझट, no nothing, education loan. हटा दो सावन की घटा. Testing at TIS previous years followed a time test strategy. The TISSNET was the first round. Next came PI. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है. चेक आउट द लिंक एट द टॉप ऑफ दिस चैनल. आपको एक बैनर दिख रहा होगा, क्लिक ऑन इट. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस. द स्टेज 1 ऑफ द सिलेक्शन विल प्योरली डिपेंड ऑन योर TISSNET स्कोर्स. मीनिंग TISSNET एग्जाम आपका होगा, तुरंत आपका TISSMAT एग्जाम होगा. For first stage, for clear stage 1, only TISSNET scores are considered. If you TISSMAT will be counted as 30% of the final weighted. TISSMAT will have the, मैंने आपको बता दिया है, percentage weightage. TISSMAT follows suit of other MBA entrance exam by introducing negative marks of 0.25. So अभी negative scoring भी हो गया है for every incorrect option selected. And TISSMAT will be conducted on the same day as TISSNET for all applicants for the TIS HRM course. All right. So here I am restricting myself to the HRM course only because TISSNET no negative marking, but TISSMAT 0.25 negative for wrong option. और आपका stage 1 में सिर्फ TISSNET score is considered and TISSMAT is considered for the final aggregate calculation weightage of 30%. That's it. And TISSMAT also, and TISSNET has a GK sectional cutoff of 14 marks. कम से कम आपको 14 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 40. ऑल राइट, TISSMAT का ये स्ट्रक्चर है. ऑल राइट, टेस्ट ड्यूरेशन सिर्फ आधा घंटा, हाफ एन आवर का टेस्ट होता है. हाफ एन आवर ऑफ TISSMAT. 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है. और इसमें क्या आता है, बेसिकली योर कॉम्प्रिहेंशन, योर DI एंड बिजनेस अवेयरनेस. So again, business awareness, basically it's a part of GK, but a business GK to assess the awareness and familiarity with business knowledge. And management DI ये normal अपना CAT वाला DI होता है, बस to assess the ability to interpret data related to economy, market, business, organization. बस आपका DI में ये सब इसके ऊपर सेट्स आएंगे, ठीक है. And your comprehension, your normal English. Understand management literature, some business related VARC passages will come. Right. Features of TISSMAT, 30 minutes का टेस्ट था. नंबर ऑफ सेक्शंस 3, जैसे मैंने बोला. 15 questions in each section. Number of questions were 45. Okay, number of marks 45 क्योंकि 1 mark per question. No sectional time limits and sectional cutoffs. So no sectional cutoffs. Negative marking of -0.25 for every wrong answer. नेक्स्ट इज ये आपको मैंने बता दिया था, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, मैनेजमेंट DI, बिजनेस अवेयरनेस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 ईच, नंबर ऑफ मार्क्स 15 ईच. ऑफ टोटल 45 मार्क्स का होता है आपका TISSMAT. ऑल राइट, सो सेक्शन 1 का देख लो, कॉम्प्रिहेंशन कैसे आया था. देयर वर 2 RC पैसेजेस, वन कंटेन्ड 8 क्वेश्चंस व्हाइल अदर कंटेन्ड 7 क्वेश्चंस. सो 2 RC पैसेजेस आता है TISSMAT में. The passages were not difficult to understand, but one had to analyze a lot of data. So आपको थोड़ा बहुत data analysis आना चाहिए passage में. So one passage was short while other was fairly lengthy. The shorter passage was on changes in operating ratios in the Indian Railways, deficit or surplus. Okay, this was the topic. So आप देख सकते हो something related to business ही आपका VARC आने वाला है. Comprehension, English comprehension. So the strategy would be to devote 12 minutes to the section and attempt at least 10 questions. So overall difficulty of this section was moderate.
आपको ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना है, आपको मैं बोलूँगा 10 से 12 मिनट दो और 9-10 क्वेश्चन कर लो। आपको पैसेज का एक आरसी का सारा क्वेश्चंस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है तो 6 भी कर लो, 5-6 क्वेश्चंस करके निपट लो, आगे नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ जाओ। ओके, डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को छोड़ दो बिकॉज यू हैव ओनली हाफ एन आवर फॉर द 45 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट DI। अभी मैनेजमेंट DI में क्या आया था, एक सेट था पाई चार्ट, एक सेट था 2 पाई चार्ट्स एंड एक था हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 555 जो 15 मार्क का आया था। एरियाज क्या थे पाई चार्ट के, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कॉज बाय 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका। 2 पाई चार्ट किस पे आया था, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स। सो बेसिकली आपका थोड़ा सा देख रहे हैं ये लोग कि आपका बिजनेस नॉलेज है कि नहीं, आप डेटा हैंडल कर पाते हो या नहीं। यू कैन सी दिस फ्रॉम बोथ ऑफ दीज बिकॉज TISSMAT का फुल फॉर्म है टिस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ एप्टीट्यूड लगता है जैसे बिजनेस नॉलेज, बिजनेस अवेयरनेस, हैंडलिंग विद द डेटा। सो बेसिकली दे आर चेकिंग ओनली दीज थिंग्स इन यू, मॉडरेट लेवल पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द GK सेक्शन ऑफ द TISSMAT प्रेजेंटेड क्वेश्चंस मेनली टू बिजनेस। सो TISSMAT का जो GK है दैट इज बिजनेस GK। ओके, अगर आप IIFT का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो IIFT का काइंड ऑफ GK आता है इट विल बी सिमिलर टू TISSMAT। ओके, TISSMAT का GK यू कैन टेक इट लाइक IIFT का GK, सिमिलर लाइंस। Alright, so there were total 15 questions which आप 5 मिनट में 15 questions आराम से GK के कर सकते हो। ओके, and the current GK questions were not so current। ओके, बहुत ही एक साल का नहीं आता है। Some of the current GK questions went back to 2014, 15, 17। सो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और थोड़ा बहुत अवेयर थे तो इट विल बी अ केक वॉक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनिशियल कट ऑफ में तो काम नहीं आ रहा है, सिर्फ TISSNET ही इनिशियल कट ऑफ में काम आ रहा है। TISSMAT का जो है वो फाइनल एग्रीगेट स्कोर में ही वेटेज इंक्लूड होने वाला है। सो don't worry bhai, some of the questions like were this on the TISSMAT GK। Which brand takes its name from a body fluid? Answer was Pepsi, from Pepsin। Which is the odd man out name of the 3 CEOs? And one name was odd man out। Which Tata group existed when Jamshedji Tata was alive? ऐसे questions आए थे। A score of 6 marks would be good in the business awareness section। So 6 marks भी आप ला रहे हो तो that is good enough, 6 out of 15। Overall analysis, a good score for TISSMAT would be 25 to 27। So 25 marks अगर आप लाते हो 45 से, that is good enough in TISSMAT। And about 30 to 35 questions should be attempted seriously with 80% accuracy। Link in the description box, go check the description box for these 2 videos। यहाँ पे मैंने first इसमें TISSMAT का sample paper बताया है आपको। Okay, do check that out। and TISSMAT and TISSNET का preparation कैसे करना है। So GK sources for TISSMAT। So you'll get the GK sources for TISSMAT in this video। Alright, these are the links। Basically ये वीडियो में मैंने ये सारे links डाले थे। These are the GK links for TISSMAT। You will find this in the comment section and in the description box। Do join my Telegram channel। Telegram channel पे मैंने भर के सारे सोर्स डाले हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो लेक्चर से लेके एवरीथिंग। In my last video I have given free GK to GDP and TISSMAT especially for human resource management, one of the best courses for HRM in India। Okay, niche course है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो दबा के अप्लाई करो एंड जस्ट एज दैट एग्जाम, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, कैट के बाद आता है काफ़ी टाइम है अभी भी, 2 महीना। अगर आप लग के कंसिस्टेंटली अच्छे से करते हो इट्स वेरी मच पॉसिबल। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हो यू कैन एज द TISSNET एग्जाम एंड डू वेल इन द TISSMAT as well। and I'll see you guys in TISS Mumbai। So yeah, all the very best। and if you have any more questions do write my Telegram channel, you comment on the comment box of this video and tell me what more videos you need। so stay tuned to this channel, subscribe because बहुत सारे वीडियो continuously आने वाले हैं। I am planning a series to get the TISSians interviewed here on my channel from different courses। so if you are a TISS aspirant, any TISS aspirant, मुंबई के aspirant हो, कोई भी कोर्स के aspirant हो, तुलजापुर के हो, हैदराबाद के हो, आपको कोर्सेज के बारे में नॉलेज चाहिए और HRM स्पेशली हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। सो गाइज कीप वॉचिंग ऑल सॉर्टेड। थैंक यू, बाय, ऑल सॉर्टेड।